Well, hello everyone. Are you ready to learn simple present tense note 3? So I welcome all of you. My name is Padar. This is online practical note and I want all of you to pay attention. You'll definitely gain a lot of ideas. Already I have given a video on note 1, note 2. Right now I'm going to share with you note 3. Please maintain the sequence. If you haven't yet watched note 1 and 2, I recommend all of you to go by that and maintain the sequence so that you can come to know more about it. So here we begin. So notice that simple present tense in note 3, we have a very nice note here. This tense is used to talk about fixed action for future activities such as agenda, announcement, official declaration, notice, holidays, schedule program, any fixed day, etc. So इसका कहने का मतलब ये है simple present tense में the way we are going to discuss on this note 3. So when we want to create agenda, कोई भी schedule action for future यानी प्लानिंग हो चुका है एंड ऑलरेडी इट इज गोइंग टू हैपन, कोई अनाउंसमेंट हो गया, ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो गया, कोई नोटिस हो गया, कोई हॉलीडेज का शेड्यूल हो गया, कुछ डे फिक्स्ड है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन. सो इन दैट सिनेरियो वी हैव टू यूज दिस नोट. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जैसा स्ट्रक्चर ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड विथ यू एंड यू हैवंट टू वॉच द वीडियो. आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू गो एंड वॉच द स्ट्रक्चर्स. जो कि सब्जेक्ट पहले आएगा, देन प्रेजेंट वर्ब और V5 फॉर्म जो कि V1 जो प्रेजेंट वर्ब में SES लगाने से V5 होते हैं. देन वी हैव ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट्स. तो ऑब्जेक्ट नहीं तो कंप्लीमेंट्स आ जाएगा. याद रखिए जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें ही हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं एंड द वर्ब्स वेयर वी डोंट यूज ऑब्जेक्ट्स दैट आर intransitive. Fine, so we can go for the complement. So let me make it out in this way so that you can understand. So let me give you a beautiful examples. His meeting with Mr. Sahu is scheduled at 7 p.m. tomorrow. कल 7 p.m. tomorrow में उसका उनका मीटिंग मिस्टर साहू के साथ शेड्यूल हो चुका है, प्रोग्राम हो चुका है. सो टुमारो यहाँ पे देखिए, नोटिस यहाँ पे टुमारो इज द फ्यूचर टाइम एंड इस शेड्यूल को देखिए, ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है. सो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, देन V3 फॉर्म यूज होते हैं, बाय का जरूरत नहीं है. सो ऑलरेडी इट इज नोन. सो टाइम से पहले एट लगते हैं. सो 7 PM हो गया. सो दे रिटायर्ड इन द ईयर ऑफ 2025 17 जून 2025 में वो रिटायर्ड कर रहे हैं. सो दे रिटायर्ड, वो लोग रिटायर्ड कर रहे हैं, यानी वो लोग रिटायर्ड जो करेंगे वो ऑलरेडी ऑफिशियल डिक्लेरेशन है, फिक्स्ड हो चुके हैं. That's why we use this tense. See, this is not wrong if you say they will retire also. But modern grammarian, they have suggested us to go by simple present tense and it is the best way to express future. So future जो fixed action है, schedule program है, official declaration है, तो ये tense में जाने के लिए modern grammarian they have suggested us. And one more thing you can notice over here, agenda, announcement, official, you can notice in most of the newspapers, magazines, जो भी शेड्यूल प्रोग्राम होते हैं उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज किया जाता है. एंड एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, सिंपल प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव एक्टिव वॉइस का है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट्स. और पैसिव का जो पॉजिटिव है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, देन V3 जो पास्ट पार्टिसिपल है, देन ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट्स आप लगा सकते हैं. और निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस डोंट एंड डजन, देन V1 लगेगा और ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट्स है. एंड इफ यू वांट टू मेक इट पैसिव नेगेटिव, देन सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, देन नॉट, देन V3 फॉर्म जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, देन ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट्स है. उसके बाद आप बाय प्लस ऑब्जेक्ट आप लगा पाएंगे. ऑब्जेक्ट यानी वी डोंट नीड टू गो फॉर द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, सो वी नीड टू गो फॉर वर्ब जो V3 के बाद कंप्लीमेंट्स आएंगे, देन बाय प्लस ऑब्जेक्ट्स. क्योंकि एक्टिव वॉइस का जो पैसिव है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है. सो वी हैव अ स्पेशल क्लास ऑन द एक्टिव पैसिव, मेरा चैनल में भी है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का फॉर्मूला. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट फॉर्मूला, आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू गो फॉर दैट. फाइन. सो वन मोर एग्जांपल, आवर स्कूल रिमेन्स क्लोज टुमारो ऑन पर्टिकुलर डेट. सो हियर ऐसा भी हम बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक आवर स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड. यस, नथिंग रॉन्ग, इज अ फ्यूचर फैक्ट है, प्रेडिक्शन है. बट रियलिटी और स्पेसिफिक शेड्यूल एक्शन को हम यदि मॉडर्न ग्रामेरियन के वे में देखें तो
simple present tense is the appropriate tense to write and introduce it. So at the time of speaking also, I want all of you to use this kind of structures. Fine. So here more to give you best clarification, I have got a beautiful agenda for all of you. एक agenda है annual function, VMI school name है, just randomly I have taken one examples. Annual function 2021 में है. Later on this 2021 is going to be something the other year, but again ये एक beautiful example है. Notice that each and every sentence is written in a sequence with present simple tense. Like welcome ceremony is at 4 p.m. All guests are welcomed with flower bouquet. The students entry pass begins at 4:15 p.m. Afterward, welcome speech starts at 4:45 p.m. Lighting ceremony is felicitated at 5 p.m. Opening mantra is chanted during lighting ceremony by the priest. After that, opening song takes place with high spirit. Then after opening song, addressing speech to the honorable chairs is held by the principal. All chairs, all teachers are welcomed to say something briefly about school. After that, speech. So I'm reading from here. So speech of guest of honor begins at 15 and 15 minutes. For 15 minutes, sharp at 5:30, our guest of speech is held. After completion of keynote speech of guest of honor, cultural program begins at 6 p.m. It is up to 7 p.m. There are 4 groups perform on the stage. Prize distribution is held at 8 p.m. to 8:45 p.m. Closing ceremony is at 8:55 p.m. The last program is dinner. It starts at 9 p.m. Departed is up to the guest. So beautifully it's been organized what is going to happen on annual function of a VMI school. So it's written in the simple present tense. So whenever you get any kind of written communication, you want to write for any official declaration, agenda, or meetings, or any kind of announcement, so I recommend all of you to go for simple present tense only. This is the best way to strengthen your grammatical form, and your English will be accurate, and you can improve your fluency of speaking. जब आप एक फॉर्मेट में अच्छे हुए में बातें करेंगे, so you will be well recognized as a good speaker, and also without any kind of disturbance you can represent your language. And याद रखिए, if you have knowledge, your confidence will be on high spirit. Yes. Now one more example, one official declaration. This is to announce that our next meeting is held on particular date. आप यहाँ पे दे सकते हैं. You all are requested to follow instruction before you join program. All participants are to register prior the meeting begins. मीटिंग शुरू होने से पहले सब लोगों को रजिस्टर करने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है, और इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए भी कहा जा रहा है, और मीटिंग ये होगा. तो ये पर्टिकुलर फ्यूचर में होने वाला है. तो आज और अभी उनको डिक्लेरेशन दिया जा रहा है और अनाउंसमेंट या नोटिस दिया जा रहा है. फाइन. योर सिंसियरली मैनेजमेंट. सो इन दिस वे वी कैन राइट एन एप्लीकेशन एंड नोटिस, और कुछ मैसेज ऑफिशियली हम दे रहे हैं, or inviting for anything, and we can go by that. Please don't mind of any background noise from home. I am at home and creating this video. So thank you, all the best. My phone number is here, website is here, and this is WhatsApp number also if you would like to know much more about it. So you are most welcome, and it's my pleasure to give you a lot of ideas. And one more thing I would like to tell you, please take a task. यहाँ पे मैं आपको एक simple सा task दे रहा हूँ. I'm sorry I couldn't write it. Deadly forgot with this busy schedule. So I want all of you to focus on this part. जैसा कि आप एक प्रोग्राम लिखिए. Tomorrow you are going to invite for interviews, तो announcement कीजिए. Tomorrow you are going to share one auction, or you want to call for meeting, or you want to announce a particular information. So उसको बारे में आप एक छोटा सा brief note बनाइए. If you don't have ideas, then you can look up न्यूज़पेपर, मैगजीन, जिसमें किस तरह से न्यूज़ आते हैं इससे रिलेटेड, एंड पोर्टफोलियो है, कुछ शेड्यूल प्रोग्राम है, इवेंट्स है, कोई टीवी का प्रोग्राम ले लीजिए, और विथ योर इमेजिनेशन यू क्रिएट अ टीवी लाइक XYZ टीवी, एंड उसको में मॉर्निंग 7 o'clock में ये प्रोग्राम है, मॉर्निंग 8 o'clock में ये है, like 7 o'clock this program, 8 o'clock this program, 9 o'clock this program. After that you start elaborating it in English, like XY program begins at this one on these channels. After that there is
this channel, this program. After completion of it, there is another beautiful channels about इस तरह से आपको in a sequence you have to write your note. The moment you create your note, I request all of you to speak on that and have a practice. Keep every note, every practice in the tip of your tongue. So at the time of speaking or delivering, so you can effectively generate your ideas. और याद रखिए, यदि आपका इंग्लिश एक करेक्ट फॉर्म में है, ग्रामेटिकल सेंस में है, आप ग्रामर को भूल जाइए. आई एम नॉट इंट्रोड्यूसिंग यू द ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन ये एक सिचुएशन है. सो ये जो टेंस है, ये एक टाइम एंड एक्शंस है. तो इसमें एक सिचुएशन है. आई गेव यू द सिचुएशन, आई गेव यू द आइडिया अबाउट हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक, एंड आई वांट यू टू फॉलो दिस टेक्निक्स. तभी आप में इंप्रूवमेंट होगा. यस. सो इट्स नॉट ऑल अबाउट ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं है. ये सिंपल एक सिचुएशन है, एक फॉर्मेट को पकड़ना है, उसी सिचुएशंस में आपको स्पीकिंग और राइटिंग को इंट्रोड्यूस करना है. एंड ट्रस्ट मी, without any confusion, you can do it. Just you need to create your interest and you need to motivate yourself to do it. और थोड़ा बहुत initially दिक्कत होंगे, but no need to be worried about it. Time will come, you can have effortless speaking and you can improve your communication skills. Yes, all the best, happy learning. Thank you, have a nice time.